Assalamu alaikum students, I am Usman Tariq with the second lecture of modern physics. The outline of our today's lecture is Wien's and Planck's law and the quantization of energy based on the Planck's law. Okay. We have already studied the Wien's displacement law, in which we have already studied these curves that for different temperatures a body emits radiations of a black body emits radiations of different wavelengths. Okay, so these black body radiations, these curves, they are basically derived from a formula which was theoretically derived by William Wien. And till 1900 there were only two formulas which would you can say define these curves, or which would fit these curves through the entire range. Initially, Lord Rayleigh, a physicist, who derived a theoretical formula based on the classical assumptions, which was good for the longer wavelengths. Then Einstein derived it independently, and then James derived from the Einstein formula. And ultimately, there was one formula which was termed as the Rayleigh-Jeans formula, and this Rayleigh-Jeans formula fitted quite well for the very long wavelengths. You can see that this solid line, this is basically the original fit, you can say, and this is the fit which is obtained from the Rayleigh jeans for the temperature of 200. So this fit was only for the very long wavelengths, but for the medium and short range wavelength it did not fit well. So basically this Rayleigh jean formula fit quite well for the very long wavelengths, and it was based on the classical assumptions. Uh, and since it only fitted for the very long wavelengths and did not fit well for the mid-range and the short wavelengths, that's why this formula was considered as unsatisfactory. Afterwards, William Bain also derived a formula for the spectral radiancy, and it fitted quite well for the short range. You can see that this dotted line, this is the Bain's law, and you can see that for the short wavelengths it is almost fitted exactly with the curve. And after passing through this peak, or then it start to separate from the original line. So it was Bain basically derived this formula, and it was considered as a very good guess. Okay. So Bain's formula fitted well for the short wavelengths, and Rayleigh-Jeans formula fitted well for the very long wavelengths. So there was a need for a one formula which can be fit through all the wavelengths. Okay. तो कोई ऐसा फार्मूला चाहिए था जी जो कि पूरी की पूरी जो वेवलेंथ की रेंज है उस पे जो है वो फिट हो जाए. जो वेन्स फार्मूला है दैट इज़ गुड फॉर द शॉर्ट वेवलेंथ्स, और जो रिलीजियंस फार्मूला है वो था वेरी लॉन्ग वेवलेंथ्स के लिए वो फिट हो रहा था. तो इस वजह से एक न्यू फार्मूला वाज रिक्वायर्ड जो कि तमाम वेवलेंथ्स के क्रॉस जो है वो फिट हो जाए. तो हम जो है फ्रॉम दीज फॉर सो फॉर वी कैन से कि जो दो फार्मूलाज जो कि अवेलेबल थे 1900 में, वेन्स फार्मूला जो कि शॉर्ट वेवलेंथ्स के लिए था, और रेलेजीन्स फार्मूला विच वाज फॉर द वेरी लॉन्ग वेवलेंथ्स. तो अक्टूबर 11 1900 में प्लांक ने जो है बर्लिन फिजिकल सोसाइटी में एक फार्मूला प्रपोज किया विच वाज R lambda. R is the spectral radiancy, which was the function of wavelength. A over lambda power 5 1 over E, B over lambda t minus 1. And this formula was basically the initial formula which was derived from by Max Planck. Okay, और ये इसने बर्लिन फिजिकल सोसाइटी में प्रेजेंट किया था.
In this formula, A and B are empirical constant, which he later calculated, and you can see. And 2 months later, he derived these two constants A and B, and he modified his formula as, तो A जो है वो आपके पास बन गया 2 पाई c² h, और जो B है उसकी जगह उसने कैलकुलेट किया ये hc/λ/k/t, ये आपके पास आ गया, where k is the Boltzmann constant and c is the speed of light. और k की वैल्यू उसने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कैलकुलेट की 1.281 ×10⁻23 जाउल्स पर केल्विन, और जो प्लांक्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू जो है दैट वाज कैलकुलेटेड एट 6.626 ×10⁻34 जाउल सेकेंड। और इसने ये जो फार्मूला कैलकुलेट किया, एंड यू कैन सी कि ये फार्मूला जो है ये कर्व के साथ जो है बहुत अच्छा जो है फिट हो रहा है। दिस फार्मूला फिटेड क्वाइट वेल विद द एक्सपेरिमेंटल कर्व, तो इस वजह से ये जो फार्मूला है दैट गॉट द रिकग्निशन in explaining the spectral radiancy curves by the due to the radiations emitted by the black body, or you can say that the cavity radiations. तो जी प्लांक ने ये जो अपना फार्मूला डिराइव किया, इट वाज बेसिकली डिराइव्ड on two assumptions कि atoms in the cavity behave like tiny oscillators, और जो second assumption थी कि the oscillators can only absorb and radiate energy in the form of packets of energy, ठीक है जी। और उन packets of energy को उसने बाद में क्वांटा का नाम दिया था, ठीक है। और लेटर ऑन ये एक सॉलिड assumption जो है वो उसने फॉर्म की कि an oscillator can emit or absorb any amount of energy which is integral multiple of hf, where h is considered as where h is called as Planck's constant, और f जो है which is s is the frequency of oscillation। तो E जो है it is integral multiple of hf, तो E is equal to nhf हो जाएगा, where n is called the principal quantum number, उसकी वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन जो है इसकी वैल्यूज जो चेंज हो सकती। तो ये बेसिक जो दो पोस्टुलेट्स थे वो ये थे कि एटम्स जो है कैविटी में दे बिहेव लाइक टाइनी ऑसिलेटर्स, और जो दूसरा था कि एटम्स ओनली अब्जॉर्ब एंड रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और वो जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं उनकी जो टोटल एनर्जी है ऑसिलेटर जो वो एमिट करते हैं और अब्जॉर्ब करते हैं दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस। तो इसका मतलब है कि ये जो एनर्जी जो है वो एमिट या अब्जॉर्ब करेगा ऑसिलेटर दैट will be in the form of discrete values, ठीक है जी, ये continuous नहीं होगा। And if we consider the example of the simple pendulum, so आपको पता है कि simple pendulum जो है we have already studied, not now but I think in intermediate you must have studied the simple pendulum, and you know that it can be considered as a simple harmonic oscillator। तो pendulum जब when you lift the pendulum up to a certain amplitude and when you release it तो वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। और आपको पता है कि जब वो वाइब्रेट कर रहा होता है तो वो अपनी एनर्जी डिसिपेट करता है। इस तरह नहीं होता कि वो हमेशा ही वाइब्रेट करता रहता है, यू नो दैट ड्यू टू फ्रिक्शन वो एनर्जी डिसिपेट करता है, और उसकी जो एनर्जी डिसिपेशन है दैट इज़ नॉट क्वांटाइज, और यू कैन से दैट कि वो डिस्क्रीट वैल्यूज़ नहीं होती बल्कि उसकी कॉन्टीन्यूस वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है जी। और जो क्वांटम थ्योरी है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि उसकी जो एनर्जी जो वो रिलीज़ कर रहा होता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टीन्यूस वैल्यूज, दैट इज़ कॉन्टीन्यूस नॉट डिस्क्रीट, सो वी कैन द क्वांटम थ्योरी कैन नॉट बी अप्लाइड। तो क्वांटम थ्योरी और जो क्लासिकल थ्योरी है इसकी सर्टन लिमिटेशन है कि क्लासिकल थ्योरी जो है एक स्टेज ऐसी आती है कि उसके बाद क्लासिकल थ्योरी जो है वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होती। तो उसके लिए फिर जो है वो क्वांटम थ्योरी का सहारा लेना पड़ता। तो क्वांटम थ्योरी और जो क्लासिकल थ्योरी है इन दोनों की आपस में जो कनेक्शन है दैट दे आर बेसिकली कनेक्टेड थ्रू अ प्रिंसिपल, एंड दिस प्रिंसिपल इज नोन एज द correspondence principle, and this principle states that the quantum theory must agree with the classical theory in the limit in which classical theory is known to agree with experiment। कि सिर्फ क्वांटम थ्योरी क्लासिकल के साथ आपके लिए उसी हद तक ही जो है वो उसके साथ एग्री कर सकती है जहाँ तक कि क्लासिकल थ्योरी जो है वो एग्री विद द एक्सपेरिमेंट। अगर कोई ऐसा मतलब क्वांटम कोई एक्सपेरिमेंट है
जिसको क्लासिकल थ्योरी जो है वो उसके साथ एग्री नहीं करती, तो उसके ऊपर फिर वो एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। सो दिस इज़ द correspondence law, which basically it is the connection between the, you can say that we can connect the classical and quantum theory by using this principle, कि जहाँ पर जो क्वांटम थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी जो है वह एक्सपेरिमेंटली फेल हो जाएगी या एक्सपेरिमेंटली एग्री नहीं करती, तो वहाँ पे जो है वो क्वांटम थ्योरी भी उसके साथ नहीं करेगी, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा जो है कुछ इसके एक दो जो हैं वो न्यूमेरिकल्स हैं, वो मैं लेटर ऑन इन द फॉर्म ऑफ इमेज जो है वो आपके साथ शेयर कर दूँगा एडमोडो पे, ठीक है। तो उसको आप देखिएगा, आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड दैट। उसमें जो है इन वन न्यूमेरिकल वी विल सी के किस तरह जो है वो ये जो रेलिस फार्मूला है, ठीक है, और ये जो वेन्स फार्मूला है वो किस तरह जो है वो वर्क करते हैं। उसके अलावा जो रिलेशन निकाला था इसने प्लांक ने, ठीक है, जो रेले है उसने निकाला था कि दैट वाज वेल फॉर द लॉन्ग वेवलेंथ, तो हम उससे कैलकुलेट करके देखेंगे प्लांक्स वाले थे कि अगर वेवलेंथ जो है बहुत हाई हो जाए तो उस केस में जो प्लांक्स फार्मूला है वो किस तरह का जो है वो क्या फॉर्म जो वो अपनी जो है वो करेगा। और उसके अलावा ये कि एज वी सी कि हमारे इर्द गिर्द जो है वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऑसिलेट कर रहे होते हैं, फिर उनके दरमियान जो एनर्जी डिफरेंसेस हैं वो हमें क्यों जो है वो इतने फील नहीं होते, वी विल सी इन अनदर न्यूमेरिकल। और आई एम गोइंग टू अपलोड दिस वीडियो ऑन एडमोडो, तो जैसे ही आपकी क्लास शुरू होती है यू विल सी दिस वीडियो, और उसके बाद जो है फिर इंशाल्लाह हम एडमोडो पे ही, इफ़ यू हैव सम क्वेश्चंस वी विल डिस्कस दोज क्वेश्चंस ऑन एडमोडो इंशाल्लाह।